previous years. Make some classes on especially the selection questions. So today, let's have a discussion on some of the selection questions. First of all, we'll have a discussion on the my especially my greatest Olympic prize ର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। First question that can be expected and that has a major role in our exam is I was not too worried about this. What I was not too worried about this. So what does this refers to? This କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ this ଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ this ଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, that is the point. ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ वी हैव टू रिमेम्बर दैट ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ବର୍ଲିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, whenever he was going to Berlin, at the time he was thinking about the childishly remark of Hitler's belief, very good, about the childishly remark being made by Adolf Hitler. Adolf Hitler जो childishly remark थिला सेई रिमार्क उपरे से चिंता करचंती। आ से रिमार्क से जो कहउतले जे आवर पीपल वर द मेंबर ऑफ मास्टर रेस and they will win, after all they are the super players like this. तो ये जो रिमार्क थिला ए रिमार्क उपरे से ए स्टेटमेंट देइचंती। सो मोटा मोटी भाव में कहले जमती कमलाकांत कहउतला हिटलर्स बिलीफ। सो दिस रेफर्स टू हिटलर्स बिलीफ। हम तो एतिकी लिखि परिबानी ना, एतिकी लिखले हमको 3 मार्क मिलबनी। सो वी मस्ट राइट समथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। प्रथमे किसी टेक्स्ट ऊपर लिखिबा, whatever was happening, कौन होउतला को समय से माने ए कथा चिंता करथले फर्स्ट ऑफ ऑल। So you can say while he was going over boat to join Berlin Olympics, at the time he was telling about the Hitler's belief. He was telling about the Hitler's belief and Hitler's remark. And here in this sentence, this refer to the Hitler's belief and Hitler's quotes that his players are the member of master race. तो ये भाया हमको किसी लिखा पड़ो। जीवा परवर्ती प्रश्न पे माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो परवर्ती प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न कौन हो पारे, व्हाट कैन बी। मुझे आउ गोटे क्वेश्चन जोटा हूँ ही रियली लुक द पार्ट। यस ही रियली लुक द पार्ट। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? रियली लुक द पार्ट, जो लुक द पार्ट बोली कह जाए स्टेटमेंटा कौन पाई व्यवहार कराई, व्हाई he has told, why chse Owens has told about Lodlong that he really looked the part, why it is told। ठीक अच्छे। तो ये आम जब टेक्स्ट ऊपर को जा, इफ विल गो टू द टेक्स्ट, आम जब भितर को जा पिले यू कैंट बिलीव yesterday evening I was just restless गतकाली still I was taking this class, though I was not interested, I was taking this class for you only, so don't miss the class। कौन है जी he really looked the part। look the part रो अर्थ कौन एठी कहा जाइछि, को जिंस कहा जाइछि जे लॉदलंग को देखिले लागुथिला he was just looking like a member of master race। नहीं ताकू देखिले लागुथिला he really looked like the people of master race। जने प्रभावशाली व्यक्तित्व थिले से, गेटिंग मी, से जड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व थे देखिले लगुला। ही हैड स्मार्ट लुक, मस्क्युलर फ्रेम, ही हैड मस्क्युलर फ्रेम थिला माने मांसल शरीर जमती आम देखी ब्रुसली फाइटर मान को देखी से भाया शरीर थिला, डेंगा होगी थिले से नहीं कि। सो दैट इज द रीजन व्हाई ही हैड टोल्ड नहीं कहीं से कहुई दैट लॉदलंग was just like the people who belongs to master race, and from his appearance it was very clear that anybody can tell he is a good player and he must have that type of performance, clearly blue eyes, yes Rajamani। So from his experience and his manner of talking, chse Owens came to decide that he was one of the person who was just looked like the part
the member of a master race. So in this case, he has told that he was a people who belongs to master race. He looked the exact part, whatever being or whatever statement being made by Adolf Hitler. So these are the points we have to remember. परवर्ती प्रश्न देखा. परवर्ती प्रश्न थिला बेले यस हाउ डिड ए प्रश्नटा मे भी नहीं परिबा इजी प्रश्न मु आलोचना करिया पई चाहू नहीं तथापि हाउ डिड ओवेन्स क्वालिफाई फॉर द फाइनल जंप. हाउ डिड ओवेन्स क्वालिफाई फॉर द फाइनल जंप. फाइनल जंप केमिति से क्वालिफाई कले. हाउ डिड ओवेन्स क्वालिफाई फॉर द फाइनल जंप. बहिरु प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा. तो एठी हम मन रखिबा जे जेसे ओवेन्स को समस्ते आशा करुले. एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग जेसे ओवेन्स. समस्ते एक्सपेक्ट करुले दैट ही वुड विन द लॉन्ग जंप हैंड्स डाउन बिकॉज कारण थिला what was the reason? The reason was the previous year, or you can say the last year, he had broken or he had set off a world record as a university student. University student हिसाब रे से कौन वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करथिले. बट ट्विस्ट इज देयर. ट्विस्ट कौन होला? ट्विस्ट ए जे से he was being disqualified in the first two trials. प्रथम दुईटा ट्रायल रे से डिस्क्वालिफाइड हो जाइछंती. एंड बाय द वाय कौन होइछि से समय लॉदलंग आसिकी ताको एडवाइस करिसंती कि तमे गोटे काम कर. यू कैन विन द ट्रायल इजिली हैंड्स डाउन. सो जस्ट ड्रॉ ए लाइन फुल फुट बिहाइंड द टेक अप बट एंड जस्ट ट्राई टू जंप फ्रॉम देयर. इट डजंट काउंट हुएवर इज फर्स्ट इन दिस ट्रायल्स. तो ए कथा सुनिला परे से कौन करचंती गोटे गोटे फुल फुट बिहाइंड गोटे लाइन टाणी एवं सेठू से जंप कर से क्वालिफाई कर. ताहले आम कौन बुझिले एथरू जे बिकॉज ऑफ लॉदलंग ओनली एंड बिकॉज ऑफ द प्रीशियस एडवाइस ऑफ लॉदलंग ओनली जेसे ओवेन्स वाज एबल टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल मैच. यस ना. सो एठी आम लिखिबा दैट आफ्टर गेटिंग fail in the two trials and being marked no jump, he was disgusted. Thereafter, he was being advised by Lodlong, and he followed the advice of Lodlong, and by doing that, he qualified for the final match. So this is the theme we are to write. हमको एमती लिखिबार अछि. पिले जिबा परवर्ती प्रश्न. परवर्ती प्रश्न. इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई इज लॉदलंग कॉल्ड ए फाइन एग्जांपल ऑफ क्यूबर्टिन्स आइडियल. कौन प्रश्नटा सुनिबा. व्हाई इज लॉदलंग कॉल्ड ए फाइन एग्जांपल ऑफ क्यूबर्टिन्स आइडियल. क्यूबर्टिन कहले पिएरो डी क्यूबर्टिन आमे समस्त जानिथिबा. ही वाज द फादर और यू कैन से द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. ठीक अछि. आज पिले कम आलोचना करवा. गोटे गोटे चैप्टर नहीं कि आलोचना करवा आम पिले. तो कौन थिला प्रश्न थिला व्हाई इज लॉदलंग कॉल्ड ए फाइन एग्जांपल ऑफ क्यूबर्टिन्स आइडियल. कहीं लॉदलंग को गोटे भल उदाहरण क्यूबर्टिन आइडियल माने आदर्शर गोटे भल उदाहरण बोली कह जाय. व्हाट इज द रीजन. तो प्रथम कथा यही प्रश्नर उत्तर लिखा पूर्व आमको जानवा पड़ो जे क्यूबर्टिन किए थिले. क्यूबर्टिन आइडियल कौन थिला नहीं. व्हाट वाज द आइडियल ऑफ फ्यूरिडी क्यूबर्टिन. सो क्यूबर्टिन कौन कहते हैं. क्यूबर्टिन कहते ओलंपिक रे मेडल जीतवाटा इंपोर्टेंट नुह. इट इज नॉट इंपोर्टेंट टू विन मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स बट द इंपोर्टेंट थिंग इज टू पार्टिसिपेट. प्रथम जिनस नहीं. दिस इज द फोर्थ थिंग. से भाया लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ जीवन विषय धारणा करथिला. जीवन विषय से कहते in the race of life whoever winning is not important but participating. Yes Niranjan. तो से कहते लाइफ विषय रे conquering is not important but it's important to fight well. जय करवाटा बड़ जिनस नुह. फाइट वेल भल से फाइट करवा युद्ध करवा ए दुईटा जिनस. Yes, I'm telling. I'm discussing only the question of my greatest Olympic prize. Aji
এই ভিডিওরে গোटे 15 मिनिट्स वीडियो भितर केवल माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज इंपोर्टाट क्वेश्चन आलोचना करवा सबुदिन ट्राए करवा आम कि प्रश्न आलोचना कर परीक्षा पूर्व सारीदे सबुतक ठीक अच्छे पे प्रोज आउ पोएट्री दिन को 5टा 6टा लेखे प्रश्न आलोचना करवा बेसी नहीं सो यू जस्ट सीट विथ योर पेन एंड पेपर राइट डाउन द नोट्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग जो नोट्स गुड़िक आम यही प्रश्न माध्यम आम चैप्टर भी पूरा पूरा आलोचना हो So awaiting also ask that participate is important winning you are not winning that doesn't important Muhammad Sohail okay all the time तो पिले एठी कहला मोर प्रश्न थिला कोन how केमती so why is Lodlong called a fine example of Cubertian's ideal so here we'll start with the question Lodlong was called a fine example of Piero de Coubertin, the founder of modern Olympic Games, because of the following points. Because of the following points. निम्नलिखित पॉइंट गुड़िक प्रमाण करे कि से एक्चुअली ये वाज द आइडियल ऑफ पिएरो डी कुबर्टिन तापर हम लिखिबा पॉइंट नंबर 1 दो जैसे ओवेंस वाज प्लेइंग अगेंस्ट लॉजलॉन्ग Though Jesse Owens was playing against Lodlong, he still tried to help him. He still tried to help him to qualify for the trial round. Point number 1. And by his advice only, Jesse Owens was able to qualify for the final. Okay. Second thing is when Jesse Owens won the gold medal. When Jesse Owens won the gold medal, at the meantime, Hitler was glaring them not more than 100 yards. Still, he went to Jesse Owens and shook hand, and it was not a fake friendship at all. He was just congratulating Jesse Owens from the bottom of his heart. From this, it is very clear that he was playing for the sports. He was playing for the game. He was playing with sportsman spirit, isn't it? That's why it's called the finest example of Piero di Coubertin. जिबा परवर्ती प्रश्न पाकु. Yes, these are the questions, important questions that are being discussed here. Next. परवर्ती प्रश्न होची how has Jesse Owens presented his friendship with Lodlong? How has Jesse Owens presented his friendship with Lodlong? किभली उपस्थापना करछंती तांकर जो फ्रेंडशिप तांकर जो बंधुता हेतिला कहा सहित लॉजलॉन्ग और जेसे ओवेन्स कर जो बंधुता हेतिला सेई बंधुता को किभली से उपस्थापन करछंती को कथा कहिकरी जस्टिफाई करछंते सो हियर लाइक ए 24 कैरेट्स ओके कमलाकांत ओके आउ कोन द फ्रेंडशिप कैन बी कॉल्ड वन इन ए मिलियन द फ्रेंडशिप वाज कंपेयर्ड विथ 24 कैरेट्स गोल्ड एंड ही हैज कोटेड दैट if anybody will take all the gold medals being won by Jesse Owens and he will melt it down से जदि मेल्ट करी दिए whatever thing will get से जा भी पाइबो से जो 24 कैरेट गोल्ड पाइबो ता सहित जदि एंकर फ्रेंडशिप को कंपेयर करा जाए if they can compare then that gold will be less important than the friendship of Lodlong and Jesse Owens. So it was being called by Jesse Owens a classic friendship. It was a classic friendship, and you can say such type of friendship are very rare in this type of mortal world. Ajikali jugare in this modern world, such type of friendship are very rare, and such type of sportsman spirit is also very rare. जीवा परवर्ती प्रश्न होची बिले शेष प्रश्न आज यही जो चैप्टर रो शेष प्रश्न आलोचना करिबा शेष प्रश्न होची यस सो
what happened what happened in the first two trials for Owens? What happens in the first two trials of Owens? जो फास्ट दुईटा ट्रायल होता से प्रथम दुईटा ट्रायल रे कौन होता? दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज यहाँ शेष प्रश्न बहुत सहज प्रश्न शेष प्रश्नटा सहजिया प्रश्न बाकी बहुत सारा प्रश्न अच्छी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर बट जो फ्रेंड्स जो प्रश्न गुड़िक तमें कर तमें एबल टू यू आर एबल टू सॉल्व से भाया प्रश्न मु आलोचना करूना ये कारण सब सहजिया प्रश्न आलोचना कर लाभ ना ना कि तो ये कौन है पिले मोर क्वेश्चन थिला जे प्रथम दुईटा जिनस कौन है कौन आम आम से खाली लिखिदेवा कि नो जंप लिखिदेवा कि 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न रे वी आर आंसरिंग 3 मार्क्स क्वेश्चन and writing while we are writing 3 mark question we can't write that it was a no jump or those jump were no jump we can't write like this na to kona hitila actually so he was anger in his mind the remark of Adolf Hitler was ringing nahi in his mind in Owens' mind the remark of Adolf Hitler was ringing he was thinking about the way Adolf Hitler treated the other nations. That's why he was a little bit angry. And what he did, as any coach will tell, an angry athlete makes mistake. Yes or no? An angry athlete makes mistake. This is the word of a coach. So that same thing had happened with Owens. That same thing had happened with Owens, and he just jumped before the mark that from where to be jumped, and it was marked no jump. It was marked no jump and he was disqualified, and the second jump was even worse. Both the jumps were marked no jump and he had only the last one left. Like this he did in the first two trials. So pile ये तो गई जो 6-7 प्रश्न आम आलोचना कला ये 6-7 प्रश्न these are the important question I think so. These are the important question for upcoming exam यही चैप्टर रु आमे आसंता काली पुणी गोटे चैप्टर नवा आसंता काली देखिबा ऑन एग्जामिनेशन को गोटे चैप्टर 6टा क्लास लागिबो 6टा क्लास रे आमे सारीबा को ट्राई करिबा सबु जिंसर किछि किछि प्रश्न सो होप सो यू विल बी देयर विथ मी टुमारो आउ 8:30 रे एग्जाम विषय कथा हवा यस एग्जाम विषय कथा हवा 8:30 रे मु कहिछि तमानकु आई हैव प्रॉमिस्ड दा मु सबुदिन तुम सहित एग्जाम विषय कथा हेबी तो 8:30 रे एग्जाम विषय कथा हवा ओके बाय बाय स्टे हेल्दी स्टे सेफ थैंक यू